Absolutely. This is a magical moment for Indian cricket. They were not prepared to just save the game. They were wanting to go out, finish the tour in a blaze of glory. Young India has done it. Young India has shown the way. Young India is showing that they are not afraid. What a win. What a magnificent win. It starts with Shubman Gill playing such a wonderful innings this morning. And then the old war-horse, Cheteshwar Pujara, making sure that there were no inroads made by the Australians in that middle session. And then Rishabh Pant coming in, once again promoted up the order at number 5 by this man Ajinkya Rahane, who has an unbeaten record now. 2 out of the 3 test matches here, he's captain, he's won both those test matches. And before that, he has captained India twice. He's won both those test matches. Kuldeep Yadav didn't get an opportunity to play. Natarajan making his debut. What a debut it's been. Prithvi also. But what a tour. What a win. Well, first, you can never take anything for granted. Second, never, ever underestimate the Indians. I mean, there's 1.5 billion Indians. If you play in that first 11, you've got to be really tough, don't you? 11 players out of 1.5 billion people. As I said, I can't compliment India enough. I mean, they haven't gone away after that first test match where we won in 3 days, bowled them out for 30-odd. For them to fight back like they did is amazing credit to them. And, you know, we've got to sometimes, the big lesson for us is that you never take anything for granted. ये नया इंडिया है, ये कुछ खास इंडिया है। 1988 के बाद गाबा में मिली है ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हार, और इस हार की जो नींव रखी, इस हार का जो अंत दिखाया, वो दिखाया पंत ने। नींव रखी थी शुभमन गिल ने। इस टीम ने जीत लिया है दिल। हमारे पास है शुभमन गिल, और जब तक मैदान पर है पंत, यानी कि भारतीय उम्मीदों का नहीं होता है अंत। दिस इज बीन द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने तो कभी देखी नहीं, और इस टेस्ट सीरीज को जीतकर आगाज हुआ है भारतीय क्रिकेट के वर्ल्ड डोमिनेशन का। भारतीय टीम अब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है विश्व की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम। जो आखिरी दिन आया, वो दिन क्या खास आया, क्यों? क्योंकि यहां तो 36 पर 9 से हुई थी शुरुआत। पहला टेस्ट मैच हार गए थे, उसके बाद प्लेयर लगातार गंवाते रहे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। सिडनी में अंत तक सांस नहीं छोड़े। वो मतलब ऐसा लगा था कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है टीम, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर की वापसी गाबा में। 4 खिलाड़ी इंजर्ड थे, 4 खिलाड़ी चले गए, पर जो आए वो क्या अच्छा है। चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो शार्दुल हो, चाहे वो नटराजन हो, इस टीम ने कमाल किया है, धमाल किया है। आई मीन दिल जीत लिया है बॉस। देखिए, हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाइज होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एतबार से या मेंटल एतबार से दोनों लेवल्स पे, दोनों टीयर्स पे अगर आप असेस करना चाहें इस परफॉर्मेंस को, कीजिए। लाजवाब परफॉर्मेंस दिखने को मिली। स्टेटिस्टिकल एतबार से तो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्ट्रेस है उनके लिए ये, मगर 30 या 31 साल के बाद शिगाफ पड़ा इस फोर्ट्रेस में और मैच हार गए। भारत का हाल बुरा था। 36 ऑल आउट के बाद दुनिया में जग हसाई हो रही थी भारत की क्रिकेट टीम की और स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप की। फिर विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, मेक शिफ्ट कैप्टनसी की जरूरत पड़ी। 6 या 7 टॉप टियर के प्लेयर्स थ्रू इंजरीज अवेलेबल नहीं थे, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की जरूरत पड़ी। इन सब सिचुएशंस को सामने रखते हुए फिर भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। उस 36 ऑल आउट के बाद जो जख्म मिला, उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया, और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। रवि शास्त्री को बहुत दाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो और आप ना सिर्फ बैकफुट पे हो, अप अगेंस्ट द वॉल हो, अगेंस्ट क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया साइड, उसके बाद थ्रू यंगस्टर्स, टियर 2 के प्लेयर्स के साथ आप मैदान में जमे रहे, चैलेंज करते रहे ऑस्ट्रेलिया को, और इन दी एंड
फिर मैच भी जीत गए और सीरीज भी जीत गए। सो इससे पता यही चलता है कि ड्रेसिंग रूम की जो एनवायरनमेंट है, जो ऐसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पॉजिटिव रहे। और कप्तानी शानदार थी, नए प्लेयर्स ने सिचुएशंस को बहुत अच्छा रीड किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब मसले मसाइल हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़ी डिफीट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि डे 5 में वो इंडिया को आउट नहीं कर सके, इस दफ़ा तो मैच ही हार गए। सो बॉलिंग के ऊपर सवालिया निशान है। नेथन लाइन की ऑफ स्पिन शायद ख़त्म हो गई है। इसी तरह से स्टार्क का फ्यूचर भी कुछ डार्क लग रहा है, क्योंकि इन स्विंग उनकी है नहीं, रन्स भी ज़्यादा देते हैं, टाइट सिचुएशंस में जो है उनकी वो फॉर्म नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। सो बैटिंग भी जो है वो भी तितर बितर है, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी की गई, फॉर्म भी ऑफ प्लेयर्स की मासवा 1-2 प्लेयर्स के। सो ऑस्ट्रेलिया को भी चीज़ें अब रीबूट करनी है, उनके लिए एक मैसिव वेकअप कॉल है। मगर क्रेडिट भारत को, जिन्होंने एक तरह से टियर 2 की टीम को खड़ा किया और वर्ल्ड चैंपियन बना। I've been seeing cricket for a long time, Adam. You and me, we've both seen a lot of cricket. And I've grown up in an era where it was almost considered forbidden to go to Australia and win. So 2018-19 was special. And at that point, I thought when I'm done with the game, I won't see anything as significant as that. I mean, there might be a World Cup, T20 World Cup, but an away series. This has been by far and away the greatest Test cricket performance I've seen by an Indian cricket team overseas. And I didn't think it could match 2018-19, but it has surpassed it and has gone beyond my wildest imagination. You are living in a rubble. Literally, this edifice that you sought to build is now being reduced to rubble. Out of that rubble, they've built this magnificent palace. And that has been built by the leader with all these young people around him. And as a turnaround in world cricket, sometimes you get carried away by the present. So sometimes you just got to sit back and say there must have been other moments too. But in the history of Indian cricket, there has not been a turnaround like this. One in Melbourne, this heist in Sydney, and this ridiculous win in Brisbane. I have not known a turnaround. If I were to retire today, I'd retire a happy man. एक बात तो ये समझ लें, जब मैंने कहा था जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है, और लोगों ने बहुत उस पर वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिस्बेन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी। मैंने कहा हाँ, ज़रूर मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मारना चाहिए, हराना चाहिए उनको, और बिल्कुल टेस्ट सीरीज नाम करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहाँ से ये सीरीज जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन होगी। जब मैंने कहा कि ये जीत जाएंगे और ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन हो जाएगी और ये आधी टीम हिंदुस्तान की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है और ये मार देगी, तो लोग हंस रहे थे। तो हंसना चाहिए, चलो लोगों का काम हंसना है, लेकिन ये बात तो आप माने, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, एक्सेप्ट ओनली मी, कि जो मैं ही कह रहा था पूरे यूट्यूब की वीडियो पे कि हिंदुस्तान टेस्ट सीरीज जीत रहा है। अगर आप मेरे इंटरव्यू उठा के देख लें पिछले 1 महीने के, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान विल विन दिस सीरीज, और लोग कह रहे हैं नहीं बहुत फैंटी खाई। मेरे हिंदुस्तानी दोस्त भी कह रहे थे नहीं यार भाई यार क्या बड़ी ऑकवर्ड सी बात कर रहे हो। आज हिंदुस्तान जीत गया भाई, तो अब भाई किसी की बात सुन भी लेते हैं। To me, it's another example of what you actually don't know, what you really have until you have to try to find it. And I think India have been so focused on their stars, their superstars, and they've got many of them. And suddenly once they go missing, I don't think they realise until now exactly what they do have. And they actually have a lot of quality cricketers underneath those shining stars. There's more stars to come through, and until these extraordinary circumstances arise, these young emerging stars never get a chance to shine because they're always in the shadow of the greater stars. तो भाई आज तो कमाल हो गया। इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी। इंडिया ने बड़ी सीरीजें जीती होंगी, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने यंग प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल में इंडिया ने नहीं, किसी भी टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती हो। 350 350 रन चेज करना दूसरी इनिंग्स में, भाई ये कमाल है कि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया इतनी यंग टीम के साथ। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो इस टेस्ट मैच से पहले जो बॉलर्स थे उनकी टोटल विकेटें 13 थी, और अभी भी जो टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है इसकी बॉलिंग ने 50 आउट नहीं है, बल्कि कह रहे 40 आउट भी नहीं है, 35 आउट भी नहीं है,
लेकिन ये अल्लाह कमाल कर दिया इन लड़कों ने. Right from the second test match, it started with, I would say, Ajinkya getting that brilliant 100 in Melbourne. And the way, the bowling attack also, though there were injuries, they made up for each other. I felt as a team, I mean, you can make out, I'm not finding words. As a team, thought it was a brilliant performance. You go to Sydney, can you imagine Vihari, who had pulled his hamstring? He was brilliant. It was Jadeja. It was Washington Sundar in the fourth test. Shardul. Ashwin was also spectacular in the third test. And the first couple of test matches, he troubled Smith. So if you see overall, the performance has been brilliant. Mohammad Siraj, stays there and he serves the nation. Incredible. I'm sure his father must be very, very proud of him, and more so after what he's been able to achieve in the fourth test match, which resulted in India winning the series. The way Rishabh has batted, he's a threatening player, and even today you could see that Australians were worried. They were restless when Rishabh was around. And also, if you see, 328 to get in the fourth innings. Shubman batted exceptionally well. Very good. I thought he looked very compact. And at the same time, he was opportunist. Whenever there was an opportunity to put the ball away, he either scored a boundary of 6. And that was a spectacular shot. So from there, then Rohit also turned up and played a couple of important innings. Pujara, I mean, what can one say about Pujara? He's been simply incredible. Taken so many blows on his body and contributed big time. And people keep talking about his strike rate, not being able to rotate strike. I would just tell Pujara to ignore those guys. They are not at the same level as what you are. So, Pujara, I hold you in extremely high regards. I think you are a world-class player. Well done on that. Natarajan, goes to Australia as a net bowler and then eventually is included in the team, plays the fourth test match and delivers. He did not look out of place. He knew what he was doing. He was his maturity was incredible. So great performance all in all. Without any doubt, the best series victory. I would say. I don't remember any series victory where there were so many injuries, and in spite of number of challenges thrown at us, the players stood tall and delivered when it mattered, and they were given opportunities at the right time. So big congratulations to team management. It starts from Ravi, Ajinkya, Vikram, Gato, everyone. I know Bharat Arun. Number of guys, I might be missing out, number of names, but to me it's Team India. So well done guys. Really proud of you.